बच्चों के साथ वो यही स्टोरी जो है वो रिपीट करते हैं, काम पे जाते हैं, वो यही स्टोरी उनको डोमिनेट करती है। मैं बुरा हूँ, मेरे से हमेशा बुरा ही होता है। दिस इज द स्टोरी। इस तरह की फिर काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज हैं। कुछ अच्छी स्टोरीज भी हैं। मैं दुनिया में तब्दीली लेके आऊँगा, ये भी एक स्टोरी। तो कुछ लोग होते हैं वो स्टोरी को लेके अपनी पूरी दुनिया चलाते हैं। उनकी शादीशुदा भी यही होता है, उनके बच्चों के साथ, और पर्सनल लाइफ में भी उनके यही होता है. So these are all stories. So as a psychotherapist, जो मेरा जो काम है वो इन स्टोरीज को समझना है और उन स्टोरीज को चेंज करना है, उन स्टोरीज को तब्दीली लेके आना या उनको दिखाना कि क्या कोई और स्टोरी भी है जो आप ये अपना सकते हैं. So these are the 3 levels of mental health. So I think that is awareness on mental health. If you can understand these 3 levels, then I think that there's a lot you can do with that. Is there any questions particularly about these levels? First question is that as you are practicing this, is it covered by OHIP? Practice is not covered by OHIP, and most mental health services are not covered by OHIP. Myself is a first aider. I got training from the City of Rana. This question is because due to the worldwide situation which is going on in Gaza and other, I got disturbed. And there was a stage that I limited my communication with my family, my kids and my wife. And day before yesterday, my wife and my son separately, one texts me, is there anything which is bothering you? I can help you out. I said, no, I'm pretty good. Then my wife came and said, I think you need some consultation. You seem to have some health issues. So, because I'm sharing that because when I saw worldwide disturbance, I never saw this before. And my belief in God is weakened because my feeling is that all those which are brutally killed by the Israelis or other, I don't believe. But those, if God is there, why did mankind? That thing is bothering me. So, ये ख्यालात हैं आपका. and then I'm thinking that if I don't listen to the news, then I'm okay. It's not bothering me. But if I get to those news which are true or false, irrespective of this, I get some assume that something is going on which is not good, and I'm not contributing to that thing to improve it. Then I feel that what's the point of my life if I cannot help someone? So that's the environment which bothers me. इसमें सवाल भी था. सवाल भी था और कुछ तो था. अच्छा, ठीक, exactly. So if there's no other questions about what is mental health, then I can move to the next part, which is what to do about mental health. Yes. It's like one question. We're talking about one's mental health. The condition of one's mental health is emergent from its person's interior or internal forces or whatever he is brought up into, or does it also is influenced by external forces? Good question. So far, the consensus is that you are born a certain way. There's a set point. There's certain out-of-the-box settings you have, default settings.
After that, it is based on your circumstance in life. And after that, it is based off of all the voluntary things you do. It almost shows up as a mathematical equation in some way. So your set point multiplied by your circumstance plus any voluntary activity you do. That is what determines your mental health. इसको उर्दू में मुश्किल है. Let's see. सवाल क्या था? सवाल ये था कि that's good. सवाल ये था कि क्या आप इन चीज़ों से आप पैदा होते हैं, आपको विरासत में मिलती है, या ये चीज़ें हैं कि जो आपको इन्वायरमेंट से मिलती है. तो जवाब मैंने दिया था कि ये चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें आप जिससे पैदा होते हैं, फिर आपकी ज़िंदगी में आपकी सर्कमस्टेंसेस क्या है, आपकी माली सर्कमस्टेंस क्या है, आप कहाँ पैदा हुए हैं, किस जगह पैदा हुए हैं, कब पैदा हुए हैं, ये सारी चीज़ें मेंटल हेल्थ से बहुत गहरा ताल्लुक है. उसके बाद जो भी आप वॉलंटरी चीज़ें करते हैं, मिसाल के तौर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, आप रोज़ वॉक पे निकलते हैं, कि आपकी कैसी है मेंटल हेल्थ. मशवरा देना चाहता हूँ आपको और एक सवाल होगा. मशवरा तो ये था कि शायद आपकी उर्दू की नॉलेज की वजह से आप दो दफ़ा ज़रूर बोलना. गलत बोला. ज़रूर और तकब्बर एक चीज़ है जो कि सिर्फ अल्लाह ताला को पसंद है. अच्छा, अपनी उसके लिए ठीक है. हमारी बंदों ये मशवरा है. जी नहीं, बिल्कुल सही. आपकी सिर्फ उर्दू की जो बेसिक है. अच्छा, जो मेरा सवाल है वो ये है कि आज के मुआशरे में डबल फेस लोग बहुत ज़्यादा, उनसे कैसे निपटें? क्योंकि मुआशरे में बहुत अच्छी इज्जत है, बहुत किया है, बड़े वो ठीक ठाक है, लेकिन जो वो यानी जो उनको देखता है, जो उनको समझ लेता है, उसका कोई मेंटल हेल्थ है या उन लोगों का फायदा है जो डबल स्टैंडर्ड और डबल फेस लोग हैं. ये मेरे प्रेजेंट का दूसरा हिस्सा है. लेकिन जो आपका मशवरा है वो बिल्कुल ठीक है. फिर इसकी फिर उर्दू क्या होगी, आप बता दें. फखर इज गुड. ठीक है, मैं फखर ही है सर. ठीक है. ये आपका एक सवाल. Yes, it is. Yes. Dementia आपके दिमाग जो है न्यूरो उसको कहते हैं डिजेनरेटिव दिमाग है, वो आपको अंदर से आहिस्ता आहिस्ता वो खुद खा जाता है. That is the byproduct of age. Mostly it is age. उसको ज़्यादा मेंटल हेल्थ में नहीं उसको लेके आते हैं, वो ज़्यादा न्यूरोलॉजिकल में हो जाता है, क्योंकि वो आपकी दिमागी हालत जो होता है, आपकी ज़हनी हालत इतनी ज़्यादा उसमें नहीं. उसके पहलू हैं, लेकिन ज़्यादातर वो आपकी दिमागी हालत है. जो सर उसका मैं आता हूँ, वो मेरा पूरा प्रेजेंटेशन का अगला हिस्सा. I will continue my presentation and then we'll continue the questions. So there are certain things that what can you do about people who have mental health problems? So this is maybe general first, and then it will get more and more specific. So the first thing that most people want to do is they want to advise. मशवरा देना चाहते हैं. कोई भी किसी भी मसले को आप लेके जाओ किसी के पास, फौरन मशवरा आता है, जो मैं समझता हूँ बहुत गलत है.
मशवरा किसी को नहीं देना चाहिए, या अगर देना है तो बहुत सोच समझ के देना चाहिए। वो कहते हैं ना, मशवरा मुफ्त का मशवरा, मुफ्त के मशवरे नहीं होने चाहिए। आमतौर पे जब भी कोई बंदा आता है आपके पास कोई मसला लेके, उसको पहले तो ये कि उसको एक बंदा चाहिए जो उसकी बातें सुन सके। वो बस चाहता है कि कोई मेरी बात सुने, मेरी बातों में हाँ मिलाए, और जो भी मैं कह रहा हूँ उससे इत्फाक करे। People don't like to be challenged. People don't like to be challenged right away. They like to be listened to. They like to be heard. And, and they like to be agreed on. You know, yeah, what you're doing makes a lot of sense. इसको हम कहते हैं validation. लोगों को चाहिए कि कोई उनके पास आए and say, हाँ, मैं भी अगर उस situation में होता, मैं भी ऐसे ही करता. ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपका it should be your first weapon when dealing with somebody who has any type of mental health problem. Now, the second part of that is giving compassion and empathy. इसमें उर्दू के बहुत अच्छे लफ्ज़, हमदर्दी. हमदर्दी के क्या मानने हैं? जितना मुझे समझ है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन हमदर्दी कि हम दर्द को हम बांटते हैं, आधा दर्द मेरा, आधा दर्द आपका. बहुत खूबसूरत. Urdu is filled with so many beautiful things. Um, you know, like even other words like duk and suk tells you right away what you should do. अगर कोई दुख है तो दुख का क्या इलाज है? उसका इलाज ये है कि सुख होना चाहिए. Some type of peace. There are other words too. I'm sure all of you know. But if somebody does come to you with any type of problem, the solution is to give some type of compassion, some type of empathy. Then the next layer of how to resolve mental health problems within our community is to strengthen the family unit. Healthy families means healthier mental health. If families are not healthy, individuals will struggle. And what is the smallest unit of a family? A couple. Mia Bibi is the smallest unit of a family. अक्सर लोग अपने बच्चों पे बहुत तवज्जो देते हैं, बच्चों की तरबियत, बच्चों की तरबियत, बच्चों की तरबियत. लेकिन सबसे ज़रूरी जो चीज़ जो है वो है मियाँ बीवी का रिश्ता आपस में. Any problem that individual has, it is because of the relationship that their parents had. This is my belief. कोई भी मसला जो एक इंसान को है वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने जो देखा है अपनी अम्मी अब्बू का रिश्ता. All of their relationship problems gets internalized to kids. Kids between the ages of 5 to 15, they have this belief that everything is their fault. उनको लगता है सारी चीज़ें जो है ना उनकी वजह से हो रही. अम्मी खुश है, अब्बू खुश है, अम्मी गुस्से में है, अब्बू गुस्से में है, उनको लगता है ये सारा उनकी वजह से हो रही. तो इस वजह से एक स्टोरी बन जाती है, जिससे हम पहले बात कर रहे थे. इस वजह से कुछ आइडियाज़ पैदा हो जाते हैं बच्चों के दिमाग में, ये क्यों हो रहा है, मैं क्यों ऐसा. और ये सारी चीज़ें is the first part is the husband and wife relationship. I can spend all day talking about how to improve a husband and wife relationship. We won't go there so much. But so the second part of this is kids don't listen to words that parents say to them. आप अपने बच्चों को जितना मर्जी आप समझाएं वो आपकी बात नहीं सुनेंगे. बात
क्या सुनते हैं? वो सुनते हैं कि क्या मेरे वालिदैन खुश हैं? It's a really, really big thing. Are your parents happy? If your parents aren't happy, you won't follow them. You won't listen to what they say. So a big part of parenting is being happy. If you are not happy, you will not be able to parent successfully. Then another part for the kids is you have to find the reason why your parents are saying what they say. You have to find a way to be proud of the things that your parents have given you. If you are not proud, then you will be ashamed. And if you're ashamed, you will develop some type of mental health problem. A lot of the mental health problems in today's youth is primarily around shame of who they are. Shame of who they are, shame of what they are, shame of everything around them. So the antidote to shame is pride. What are the gifts that you've been given being who you are? That is a big part of mental health. Now, there's one part that I think is important to mention as well. So we're talking about parenting and healthy families. From your mothers, you get a sense of belonging. You get अच्छा आवाज नहीं आ रहा मैं उर्दू में सोच रहा हूँ कि क्या कहना चाहिए माओ से आपको क्या मिलता है माओ से आपको मिलता है प्यार मिलता है माँ का प्यार होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी गलत नहीं कर पाते अगर आपको ये बहुत ज्यादा मिल जाए तो क्या लगता है you get spoiled too much maternal love बिगड़ जाते हैं लेकिन एक बाप से क्या मिलता है बाप से मिलता है आपकी अहमियत अगर बहुत ज्यादा ये प्यार मिले तो आपको लगता है